Okay. Okay. Hello everyone. I hope that my audio and video is clear, and what I can see my video is a little bit lack of light is there. So please adjust for today uh, because of some reasons I have to use another camera today. So just forgive me for this inconvenience, obviously. So okay, let us start with the third chapter basically. तो जो तीसरा चैप्टर था उसमें 3-4 क्वेश्चन था, तो वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर था नहीं, तो इसके लिए आज के लेक्चर में मतलब आज के जो सीजन है इसमें हम ये फोर्थ चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन। तो पहले बोल देते हैं कि वेलकम टू एमएक्स लाइव, एंड इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस SSCJE 20 years previous years questions of fluid mechanics, and we have already completed 2 chapters। हमने प्रेशर मेजरमेंट कर लिया था और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी कर लिया था और फ्लूइड प्रॉपर्टीज कर लिया था। उसमें जो 50-50 क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी, लगभग 40-45 questions of hydrostatic forces and pressure measurement we have already completed, and in this class we are with buoyancy and flotation, right? So let us start with the first question of this chapter, and this chapter is also containing 20 to 3 questions, and all are conceptual and very easy questions, but these are very important questions from exam point of view, right? So let us start with the first question of the chapter buoyancy and flotation. Let us start with the question. The first question is saying us the center of buoyancy always. Option A is coincides with the center of gravity. Option B is coincides with the centroid of the volume of fluid displaced. We don't need to go to any other option because we already get the original answer. Right now, for this case, option B will be the right answer, which coincides with the centroid of the volume of displaced fluid, right? So if let us see if this is a water level, this is the water level, and let us suppose that this is a body. Now if this much of amount is under the water, मान लेते हैं कि this much of amount already submerged हो चुका है, तो buoyancy force, the center of buoyancy कहाँ एक्ट करेगा, राइट? सेंटर ऑफ buoyancy कहाँ एक्ट करना चाहिए? तो लेट अस टेक दिस कि वी नीड टू नो हियर कि जितना अमाउंट ऑफ, जितना वॉल्यूम पानी में या कोई भी फ्लूइड में जब सबमर्ज होगा, तो वो उतना ही वॉल्यूम का, उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। तो लेट अस चेक द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कैसा होगा, कितना अमाउंट या कितना वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड हम लोग का मतलब इस लिक्विड में सबमर्ज हुआ, दिस अमाउंट, जिसको मैं ये ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, दिस मच ऑफ अमाउंट of the solid has inserted or has submerged to the fluid, right? तो इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड को ये डिस्प्लेस करेगा, तो इतना वॉल्यूम को ये डिस्प्लेस करेगा। तो लेट अस ड्रॉ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अगर हम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड को ड्रॉ करें तो दिस वुड बी द वॉल्यूम और दिस वुड बी द साइज ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, राइट? ये क्या है? ये है, दिस इज डिस्प्लेस्ड फ्लूइड।
So let us check the center of gravity. If I want to like find the center of gravity for this displaced fluid, so will be somewhere around in the middle. So this is nothing but Cg of displaced fluid. This is Cg of displaced fluid, and this is the center of buoyancy as well, which we name as B. This is the center of buoyancy as well. But oh, 1 second. So in this case, option B is the right answer. I hope it would be clear to all. Let us go to the next question. Okay, so let us come to the second question. The second question is saying that a submerged body in water is subjected to buoyancy equal to, एक submerged body है, ठीक है, in water which is subjected to buoyancy equal to, कितना amount of buoyancy force वो feel करेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि the volume of water displaced, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि the weight of water displaced, ठीक है. तो we have a principle here called Archimedes principle. So according to Archimedes principle, the buoyancy force is equals to the weight of the fluid displaced. This would be the buoyancy force, ठीक है. And अगर इसको हम मैथमेटिकली कहें तो this would be rho of, like let us tell you that specific weight is equals to weight of the fluid upon the volume of the fluid, right? So what if we want to calculate the weight of fluid? That will be specific weight into volume. So what is specific weight? That is rho of fluid into g into volume, right? So this is the specific weight. Now this would be the weight of the fluid displaced, right? So this will be a rho of fluid into g into this volume of fluid displaced. So this is the mathematical expression for that. इसको आप और एक तरीका है इसको फिर से सॉल्व करने के लिए, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर फोर्स अगर हम बोले तो इट विल बी एफ बाई ए ऑब्वियसली. तो एफ अगर हम इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एफ हियर, सो इट विल बी कमिंग आउट एज प्रेशर इनटू एरिया. ओके, this would be the weight, and if I calculate that like for this kind of a body which is completely submerged, so this, if this height is x1 and this height will be x2, so and this is h. So if we want to calculate the pressure difference between point this x2 point and x1 point, so it will be somehow coming out as the rho f g x2 minus x1. Okay, and if we want to calculate the force, we have to multiply this by area. So it will be rho f g, and this is coming out as h into a. So this is nothing but the volume of this body as well as the volume of the fluid displaced. So we can write here that is volume of the fluid displaced. Okay, this is actually a bit big derivation. I am just doing this as a short manner, but obviously if it is needed, I will be deriving you in a very detailed manner also, not a problem. So for this question we have the answer as option B. So option B is this, the weight of the water displaced will be equal to buoyancy force. Okay, now let us
go to the third question of today's session. The third question is, the magnitude of the buoyant force can be determined by whose law? Obviously, in the before the question of the second question, I told you that the principle is of Archimedes principle. So this answer will be Archimedes principle, because this derivation is actually coming from Archimedes principle, right? So this is the derivation, or this is the equation, or this is the formula to calculate the amount of buoyant force. So this is the right answer for the question 3, Archimedes principle, right? Now the fourth, the floating body will remain in stable equilibrium if the meta center is. Now let me tell you what is meta center. So we have to again assume something. What we have to assume, let us go to the next page and let us draw that if there is a water level and a body is partially submerged, right? For that body, and let us suppose that that is water. So this is the water, right? Now for that particular body, let us assume that this is the center of gravity for the body. I'm not saying the of the displaced fluid. No, I am saying about the center of gravity of the body itself. And let us assume again that this is the axis. This is the neutral axis of the body, and this is named as center of gravity of body. This is the center of gravity of the body. Now let us calculate the center of gravity of the displaced fluid. So this is the amount of displaced fluid. I hope this much amount, this will be the amount of displaced fluid. And if this is the displaced fluid, so where will be the center of gravity of the displaced fluid? Obviously at the middle. So somewhere here, this is the CG of displaced fluid, जिसको हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ बाउंसी एज वेल. तो यहाँ से बाउंसी फोर्स एक्ट करेगा. ओके, तो इसको हम नाम देते हैं बी एंड दिस इज नेम्ड एज जी. So this is a neutral position, right? Now we have to calculate for the equilibrium position. If I want to calculate for the equilibrium position, what we have to do? Now let us do something. Let us tilt this body in a this manner, right? Clockwise. Let us tilt the body in a clockwise manner. So what will be this? If I want to tilt the body, so in the second case it will be coming out like that. If this is the water level or water, so this will be somehow the position. This is the tilted body, right? So according to the tilted body, and this will be the neutral axis. Okay, is that right? This is the neutral axis for the tilted body. And wait, this is the neutral axis. Let us point this. This is G, right? Now let us calculate the volume of displaced, which has been the volume of the fluid which has been displaced. So this is nothing but the shape is somehow around this. And if this is the volume or this is the shape, the center of gravity must be somewhere around here. And yes, according to this, the volume is somewhere around there. Let us assume this is the center of buoyancy, or let us name this as B only. This is center of buoyancy, right?
So this center of gravity that is act like that, and this center of buoyancy will act like, sorry, this center of buoyancy will act upward. This is obviously, this will act upward. Now let us connect this center of buoyancy with, let us assume that with this point it actually coincides. Wait a second, let us meet that. Let me draw this in a clear manner. Wait a second, let me draw this. Okay, so suppose the point is actually meeting here. This will be, yeah, for that particular case, let us assume this is center of buoyancy. This is the B, and this will act obviously towards upward. This will be acting upward. So what you can see, we have already tilted the body in this manner, okay, in a clockwise manner, but we are getting a couple there, a couple of what, this a downward force and upward force, this, so the couple is anti-clockwise, right? See, this will be anti-clockwise couple creating. So let us see this. This is an anti-clockwise couple which is acting by the force of G and the force of buoyancy, right? So this anti-clockwise couple will try to make this body in a stable manner, because we have actually tilted the body in clockwise, and the internal movement is trying to tilt the body in an anti clockwise. So द थिंग इज कि ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा. हम क्लॉकवाइज टिल्ट किए, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये खुद को टिल्ट करना चाहेगा. ठीक है, तो ये वाला चीज को हम बोलेंगे कि दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस पॉइंट व्हिच एक्चुअली ये अपना जो बॉयंसी फोर्स जाके न्यूट्रल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक पॉइंट. एंड लेट मी नेम दिस एज एम, and this is nothing but metacentric point. मेटासेंट्रिक पॉइंट क्या होता है या मेटा सेंटर क्या होता है? जिस पॉइंट के अबाउट अ बॉडी इज जस्ट अबाउट टू ऑसिलेट, इस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेशन स्टार्ट करना चाहेगा, और जब ऑसिलेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट करेगा, इस पॉइंट वाला. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेटा सेंटर. तो ये है मेटा सेंटर. तो द थिंग इज कि अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहेगा तो ये इसको और हाँ, मेटासेंट्रिक हाइट किसको बोलते हैं? मेटासेंट्रिक हाइट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द मेटा सेंटर. सो इट विल बी mgm will be metacentric height. ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव द आंसर नाउ. कि क्या बोला है कि मेटा सेंटर is above the center of gravity. Option B is the right answer, because if it is above the center of gravity, then only it will be in stable equilibrium. But if it is not in it is not above the center of gravity, it will be in unstable equilibrium. And let me show you that how does it work as unstable equilibrium, right? So this is the water level, and let us suppose this time we have a body which is already like this. This is our body which is partially submerged, and this is the neutral axis for this body. Okay, if this is the neutral axis, so this is the neutral axis. So this, let us suppose as this is the middle point and this is G, right? And this is the center of gravity, that is, let me name this as only G, center of gravity of the body itself. And let us now draw, this is something, the shape, not this, wait, somehow this will be the shape of the displaced fluid. Yes, somehow this will be the shape of the displaced fluid, right? So what will be the buoyancy point for this displaced fluid? This will be somewhere around here.
So let me assume that buoyancy point is the center of buoyancy is here. Now this center of gravity will exert the force or pressure in a downward direction, whereas the buoyancy will try to exert pressure or force at upward direction. Now for this case it is already tilted in a clockwise manner, and now let us see our component which is actually giving the moment in clockwise manner too. तो पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि हम टिल्ट किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इंटरनल मूवमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट इज समहाउ गेट बैलेंस्ड. बट इन दिस केस, ये वाला केस में क्या हो रहा है, हम टिल्ट किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अंदर वाला जो मोमेंटम आता है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एंड इट रिजल्ट कि ये पूरा डूब जाएगा. ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, तो फॉर दिस केस वी यूज टू टेल दिस एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. Now let me connect this buoyancy to the neutral axis. If I connect this, we get a point over there, and what is this? This point is nothing but the meta center. So for this, for unstable equilibrium, we find that the meta center is below the center of gravity, but for stable equilibrium, the meta center is coming out to be the in the above of space अपना क्या है, center of gravity of the body. So this is the right answer. उसके साथ ये भी बता दिया आपको. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास. द बाउंसी डिपेंड्स अपॉन द व्हाट? प्रेशर विथ व्हिच द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, द वेट ऑफ द फ्लूइड लिक्विड डिस्प्लेस. और जाने का जरूरत नहीं है, दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. पहले ही बोला कि अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल द बाउंसी डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. ठीक है, क्योंकि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू nothing but buoyancy force. This is only equal to the buoyancy force. Okay, now let us go to the sixth question of today's class. For stability of floating bodies, the meta center should be. ये ऑलरेडी मैंने बोला कि स्टेबिलिटी, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो मेटा सेंटर को कहाँ होना चाहिए बॉडी का? इट शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो मैंने अभी अभी बोला कि दिस शुड बी लाइक दिस. so this is meta center, this is this is center of gravity of the body, and this should be center of buoyancy. तो ऑप्शन होगा ऑप्शन A, above the center of gravity of the body, obviously of the body, and this is the right answer. So option A is our right answer. So the seventh question is saying the point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken to act is known as. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वो पॉइंट एक सबमर्ज बॉडी में, ठीक है, बोल रहे हैं कि सबमर्ज बॉडी में थ्रू व्हिच द रिजल्टेंट प्रेशर, तो व्हाट इज आवर buoyancy force? It is nothing, it is the net vertical pressure exerted by the fluid to the body. ठीक है, तो यही है बाउंसी फोर्स. तो ये एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द बाउंसी फोर्स, द बॉडी थ्रू व्हिच द रिजल्टेंट प्रेशर विल एक्ट ऑफ द लिक्विड मे बी. तो ये बोल रहा है कि कौन सा वो पॉइंट है जहां पे बाउंसी फोर्स एक्ट करेगा. ऑब्वियसली वी नो द बाउंसी फोर्स एक्ट इन द सेंटर ऑफ बाउंसी, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सेंटर ऑफ बाउंसी से काम करेगा बाउंसी फोर्स. तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा पॉइंट है जहां पे बाउंसी फोर्स काम करेगा. तो बाउंसी फोर्स विल एक्ट to center of buoyancy. I hope this is clear to all, and now let us go to the eighth question. The resultant upward pressure of the fluid and immersed body is called as, I have already told you in the previous question, that is buoyancy. Resultant upward force क्या होगा? तो resultant upward force की मतलब ये होता है कि let us assume this is the water level and we have a body
बॉडी को हम रेड में दिखा देते हैं, ठीक है। सो वी हैव द बॉडी हियर। नाउ this distance is x1 and this whole distance is x2, and the height of the object or the body is called as h. So let me name this at first. This height is x2, this height is x1, and this is h, right? Now here it is completely water. Now what is happening? We will try to calculate, or we will try to find the pressure or net pressure exerted by fluid to the body. तो बॉडी में जो नेट प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है बाय द फ्लूइड, तो इसमें हम बॉडी का वेट को पहले निगलेक्ट मतलब लेंगे नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ फ्लूइड का दिया हुआ प्रेशर चाहिए है। तो पहले क्या होगा, फ्लूइड विल exert pressure in this plane, right? So what will be this? Let us assume the rho of the fluid is rho, I mean to say that the density of fluid is rho, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट पे फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं अगर वन पॉइंट, तो एक वन वाला पॉइंट में we have the pressure as rho into g into x1. We have this pressure here, okay? Now, and in the second point, if I see, it is rho into g into x2. Now what will be the bigger force? Rho g x1 will be a bigger pressure, or rho g x2 will be bigger, because as the x2 is greater, rho and g is constant for a particular liquid or particular fluid, rho and g will be constant, so it will be vary with this x2. So x2 is bigger, so I can say that x2 is greater than rho g x1. Now if I want to calculate the force, the net force, if I want to calculate, so what will be this? The net force will be, so this is the pressure, right? This is the pressure. So if I want to pressure force here, so what we have to calculate? If I want to calculate, if I want to calculate the force, we need to calculate P into A. So what will be this? Rho G x1 and this surface area upon which this is acting, right? And this surface area is same, so it will be also f2. If I name this as x1, so it will f2 will be equals to rho g x2a. So wait, let me change this. Wait, it is not visible to you all. So this will be, if I want to calculate the f2 will be coming out rho g x2a. Now if I want to calculate the net vertical force, the net, so what will be this? This will be f2 minus f1 is equals to rho g x2a minus rho g x1a. And let me take this common, rho g a is taken common, so it will be x2 minus x1 obviously. And what is x2 minus x1? Let me show you what is x2 minus x1. X2 minus x1, this is x2 and this is x1. So if I, this is whole is x2 and this little is x1, so if I like subtract both, it will be coming out as this height. So this height is nothing but h. So this is h, nothing but. So this is coming out as rho g a h. What is h? What is h? What is this ah? A into h is the volume of the body. But in this case, we can say also that the ah is not only the volume of the body, it is also the volume of the fluid displaced.
It is also the volume of the fluid displaced. So we can write here that as this rho is taken, जो रो हमने लिया है वो रो लिया है हम किसका, फ्लूइड का, रो फ्लूइड, लेट अस नेम दिस एज रो एफ। तो रो ऑफ फ्लूइड ऐसे अगर हम नाम देते हैं तो ये होगा रो इन ऑफ फ्लूइड इनटू जी इनटू वॉल्यूम। तो इसको हम लिख देते हैं कि वी एफ डी मतलब वॉल्यूम ऑफ fluid displaced, and this is the net vertical force, so it will be called as buoyancy force. So this is your derivation of buoyancy force, and this is the equation for buoyancy force. So क्या क्वेश्चन था हम लोगों का कि the resultant upward pressure of the fluid on an immersed body is called as nothing but buoyancy. So option B will be the right answer. I hope this is clear to all. Now let us come to the ninth question of today's class, and it is saying us an odd shaped body weighing 7.5 kilo. The weight of the body is given us as 7.5 kilo and occupying 0.01 cubic meter of volume. इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, इसका वेट भी दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है कि ये कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा, ये कंप्लीटली डूब जाएगा ऐसा फ्लूइड में जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। तो कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला एक फ्लूइड चाहिए होगा, इस वाला वेट का एक बॉडी है जो 7.5 किलो है उसको, और जिसका वॉल्यूम भी दिया है कि 0.01 क्यूबिक मीटर है। तो ऐसे एक बॉडी पूरा सबमर्ज होने के लिए कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फ्लूइड हमको चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट मी शो यू कि ये बोला हुआ है कि वेट ऑफ द बॉडी दिया है 7.5 किलो और वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी दिया है, वॉल्यूम है 0.01 क्यूबिक मीटर, राइट। तो बोल रहे हैं कि ये वाला वॉल्यूम को पूरा सबमर्ज्ड होगा। तो पूरा सबमर्ज के लिए क्या है, दिस विल बी द, इफ दिस इज लिक्विड तो ये है पूरा सबमर्ज्ड, ये पूरा सबमर्ज्ड है। ठीक है, ये वाला वो बॉडी है जो पूरा सबमर्ज्ड है। तो इसका मतलब है कि ये इतना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ये इसका खुद का है, ये अगर पूरा सबमर्ज्ड होगा तो इतना वॉल्यूम का ये फ्लूइड भी डिस्प्लेस कर देगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 0.01 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड तो हमको पता चल गया। तो ये हमको बोल रहे हैं कि तुम ये निकाल के दो कि हमारा ये फ्लूइड का, जो फ्लूइड में ये डूबेगा, इस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो वी नो दैट द वेट ऑफ द बॉडी, जो वेट होगा बॉडी का विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इस बॉडी का जो वेट आएगा वो इस जो वेट ऑफ द, जो जितना फ्लूइड ये डिस्प्लेस करेगा उसका green screen. Then is this occurring any problem? Is this fine now? Actually, I'm very sorry because of the video quality, because today I am using the camera is not so appropriate. And yes, from tomorrow it will, I will use my the second one. Actually, I use my mobile phone and as a camera, but today this, the quality of the camera is not that good, I hope. That is why it is so dark kind of video I am recording today. So no problem, sir. From tomorrow I will try to change this. Okay. So yes, the theory was that the weight of the body will be equal to weight of the fluid which has been displayed, right? So what is the weight of the body? That is 7.5 kg, right?
So this will be, so let me write this as 7.5 weight fluid equals to, so this will be coming out as, let me change the color, okay, this will be coming out as weight of the displaced fluid. So what is the weight of the displaced fluid? Let me write this as, let us assume the density of fluid is to be rho g, rho f, and this will be the specific weight now into volume. So this will be 0.01, right? And let this is the weight is given as 7 kilo, right? Now if I want to calculate this, it will be coming out as, this rho f will be coming out as 750, I hope, yes, this will be coming out as 750. And wait a second, just a second, yes, if this weight is given as, weight is given as already, we have 7.5 kilo, and we need to calculate the specific gravity. Okay, we need to calculate the specific gravity. If I want to calculate the specific gravity, it is given as 750. Now if I want to calculate the specific gravity, it will be rho upon, okay, now I understand properly. Okay, so the specific gravity will be rho of water, so 750 upon 1000, which will be 0.75. Let us check the answer. Yes, 0.75. Option D is the right answer for the question. I hope the green screen is right now. I have actually, okay, I understood the problem. I hope this is clear right now. The strip is missing right now, right? Actually, okay, the placement of the green screen was not appropriate. Okay, thank you, sir. Okay, so this is the right answer for the ninth question, which is 0.75, obviously. So let us go to the next question. तो ये बोल रहा है कि ये बॉडी is said to be in equilibrium if it moves horizontally, if it moves vertically, if it rotates about its CG. This is, I think, the body to be in equilibrium, what you need, the metacentric point should be above of the center of gravity, and it, the oscillation should be occurred with respect to the metacentric point according to the derivation. दिस इज द थिंग कि अगर ऑसिलेशन होना भी है तो दिस अकॉर्डिंग टू दिस मेटासेंट्रिक पॉइंट इट शुड बी ऑकरिंग, राइट? एंड द सेंटर मेटासेंट्रिक point, the meta center should be above of the specific gravity of the body, and this is the thing. तो इसमें बोला है कि इसमें एक भी ऑप्शन नहीं होगा सही, ठीक है, ये होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये मूव हॉरिजॉन्टली, ये इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए द मेटासेंट्रिक पॉइंट शुड बी अबव of the center of gravity of our body, right? So this is the condition. Option D is the right answer for the question. 11 बोल रहे हैं कि मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन, मेटासेंट्रिक हाइट किसका डिस्टेंस मैंने बोला था पहले ही कि जी एम होगा, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द मेटासेंट्रिक पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द मेटासेंट्रिक हाइट. सो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द बॉडी एंड द मेटा सेंटर. ऑप्शन ए ही राइट आंसर है और जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वी गॉट द राइट आंसर. ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. दिस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ जो मेटा सेंटर का डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द मेटासेंट्रिक हाइट. तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. इट इज 12th. The center of gravity of a thin hollow cone lines of the axis of symmetry at height will be, ये है 1/3 होगा, ठीक है, ये 1/3 होता है कि अगर कोई होलो होगा, सेकंड, दिस इज द शेप,
तो इसका बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिस विल बी जी, ऐसा होगा h/3 दिस विल बी, ठीक है। अगर ये रिजिड बॉडी होता तो ये h/4 होता, ठीक है। फॉर रिजिड बॉडी अगर ये पूरा रिजिड होता तो ये h/4 आ जाता, बट इन दिस केस इट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। दिस विल बी 1/3 ऑफ द टोटल हाइट अबव बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो ये बोला है कि अपना द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर दिया है of a fluid on a floating body is equals to the weight of the fluid displaced by the body is this is the definition of, ये क्या है, बाउंसी का ही तो है। द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर दिया हुआ है ऑफ ए फ्लूइड ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो इसको बाउंसी बोलते हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी डिराइव दैट एंड दिस इज कॉल्ड एज buoyancy of now the 14th question, the line of action of the buoyant force acts through the centroid of the fluid displaced, ये देखो ऑप्शन डी। क्या बोला कि अगर ये वाला, अगर ये एक बॉडी है जो, सॉरी, अगर एक सबमर्ज्ड बॉडी है, दिस लेट अस अस्यूम दिस इज टू बी द बॉडी, तो इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होगा, जितना भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड, या जितना भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये डिस्प्लेस करेगा, ये कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, जितना अमाउंट ये खुद पानी के अंदर जाएगा, ये फ्लूइड का अंदर जाएगा। तो लेट मी एज्यूम दैट दिस इज द अमाउंट, ये वाला अमाउंट ये अंदर किया है, ठीक है। इतना वॉल्यूम का जो सॉलिड है, इतना वॉल्यूम का जो बॉडी है वो फ्लूइड के अंदर गया है, ठीक है, लिक्विड के अंदर। तो इतना ही अमाउंट, इतना ही वॉल्यूम का एक सेम, अगर हम ये स्क्वायर बना दे इतना अमाउंट का, ठीक है, तो इतना ही साइज का या इतना ही वॉल्यूम का ये फ्लूइड को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो लेट मी एज्यूम दिस शुड बी द फ्लूइड। मान लो कि ये दिस इज द फ्लूइड, इतना अमाउंट का फ्लूइड ये डिस्प्लेस करेगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हिच दिस इज हैविंग, वही विल बी कॉल्ड, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही बोलेगा सेंटर ऑफ बाउंसी। इसको हम बी से डिनोट कर रहे थे इतने देर तक, एंड यहाँ से इस पॉइंट से ही ये एक्ट करेगा बाउंसी फोर्स। तो ये दिस विल बी समवेयर अराउंड, इसका मिडिल, ये टोटल बॉडी का जो मिडिल पार्ट होगा वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जी होगा। और ये वाला जो जितना वॉल्यूम है, इसका जो मिडिल जो आएगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, इसको हम बोल देंगे बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। यहाँ पे एक्ट करेगा बॉयंसी फोर्स, यहाँ पे एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट फ्रॉम दिस जी, एंड बॉयंसी फोर्स एफ बी विल बी एक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट बी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो फॉर दैट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ ये बोल रहा है कि द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। तो ये देखो, ये टाइम ऑसिलेशन जो टाइम पीरियड होता है उसका जो फॉर्मूला है, दिस इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वेट इनटू मेटासेंट्रिक हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, g is, sorry, g weight, w is the weight of the body, and this gm is metacentric height. This is metacentric height, right? तो ये अगर मेटासेंट्रिक हाइट होगा, तो अगर मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगा, so with the increase of metacentric height the time will be decreasing, and with उल्टा होगा, अगर ये डिक्रीज होगा ये टाइम will be increase। तो ये बोल रहा है कि द टाइम ऑफ ऑसिलेशन फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज ऑफ मेटासेंट्रिक, अगर ये इंक्रीज कर देगा तो टाइम विल बी ऑप्शन सी लोअर, टाइम कम लगेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस गो टू द 16th वन। ये बोल रहे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बाउंसी, इट इज द पॉइंट वेयर द बाउंड फोर्स एक्ट
हाँ, सेंटर ऑफ बॉयंसी में बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा। इट कोइंसाइड्स विथ द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये कोइंसाइड करता है विद द सेंट्रोइड। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। Which one of the following statement is correct about the center points? Okay. It is the point where buoyant force acts and it coincides with the centroid of the volume of water displaced. ये भी सही है. It acts outside the body. गजब है. ये तो स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहा है, तो ये तीनों ही करेक्ट होगा, ये नहीं है. लेट मी चेक दिस. ये मैं बता, शायद ये नॉट करेक्ट होगा, विच इज नॉट करेक्ट बोला होगा. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, आई होप. मेरे को ये लगता है. ये तो सही है, ये भी सही है. इट इज द पॉइंट विद द बाउंड फोर्स एक्ट एंड इट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ वॉल्यूम. ये भी सही है, नहीं सही है. फिलहाल के लिए इसको ऑप्शन सी मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में ये कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है कि ऑप्शन सी में ये पूरा इसका. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस. कि ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो कंप्लीट करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है. ये तो पार्शियली था, ये हाफ था, ये भी हाफ था, लेकिन इसमें पूरा दिया हुआ है कि इट इज द पॉइंट विद द बॉयंट फोर्स एक्ट, ठीक है. और ये कोइंसाइड करता है किसके साथ? सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के साथ. तो ऑप्शन सी हम मान लेते हैं करेक्ट है, क्योंकि इसमें कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. नाउ 17 बोले कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जो डायमेंशन भी इसका दिया है कि 2 × 1 × 1 इज फ्लोटिंग इन द वाटर विथ इमर्स्ड डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर. ये एक्चुअली गलती से ये वाला स्लाइड पिछले वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में स्लाइड में भी आ गया था, तो उसमें भी मैंने ये सॉल्व कर दिया, इसमें भी कर देते हैं, ठीक है. तो ये बोला है कि एक बॉडी है जो ये है बॉडी, ठीक है. ये बोल रहे हैं क्या हुआ? इन द वाटर विद इमर्सिंग डेप्थ ऑफ 0.5, ठीक है. तो इसमें दिया हुआ है कि ये 0.5, अगर ये 1 है, एक्चुअली ये थोड़ा गलती कर दिया, एक सेकंड. ड्राइंग को इसको करना पड़ेगा ठीक ठाक. ये 2 है तो ये होगा 1, ये भी होगा 1, ठीक है, फिर से 2, ठीक है. और ये जो है ये भी 1 1 होगा, ठीक है. ये भी 1 है, ये भी अपना 1 है, तो ये भी अपना 1. और ये है वाटर का लेवल, गलती से यही ब्लू में बना दिया. ये है वाटर लेवल. डेप्थ ऑफ इमर्शन क्या है? दिस वाला हाइट इज 0.5 मीटर, ठीक है. और ये टोटल क्या है? 1 मीटर है. ये टोटल क्या है? 2 मीटर है, ठीक है. और ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, राइट. तो इसमें हमको क्या चाहिए? चाहिए होगा कि अपना व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर. अच्छा, वेट चाहिए ब्लॉक का, तो ठीक है. हमें पता है कि वेट ऑफ द बॉडी, जिसको डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है. तो वाटर कितना डिस्प्लेस्ड हुआ? इतना अमाउंट डिस्प्लेस हुआ. तो ये अगर वाटर डिस्प्लेस्ड की हम ये डायग्राम बनाए, तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जिसमें ये होगा 0.5 मीटर, ये तो अपना 2 मीटर ही है, और ये अपना 1 मीटर ही है, ठीक है. हाइट कम हो गया क्योंकि हाफ सबमर्ज्ड है ना, तो ये 0.5 मीटर सबमर्ज्ड हुआ है, तो इतना ही वॉल्यूम का वाटर वो अपना ये करेगा, ठीक है, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है. तो इसका देखिए ये दिया हुआ है कि यूनिट वेट दिया हुआ है, ठीक है. तो हमें ये तो रो इंटू जी इंटू
ये अपना वेट है तो वॉल्यूम तो निकालना होगा, तो 0.5 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज द वॉल्यूम। तो जस्ट सेकेंड, ओके। तो वेट ऑफ द बॉडी विल बी, ये दिया है 10 एंड दिस विल बी 1, इफ आई मल्टीप्लाई तो वेट ऑफ बॉडी विल बी 10 किलो न्यूटन, वेट सेकेंड, ओके। सो ऑटो ये किलो न्यूटन में ही था ऑलरेडी, ये 10 जो दिया हुआ था किलो न्यूटन में था, मैंने इसको न्यूटन में किया भी नहीं, तो ऑप्शन हम लोग को आएगा किलो न्यूटन में ही आएगा। सो वेट ऑफ द बॉडी इज 10 किलो न्यूटन, द राइट आंसर इज ये है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू ऑल। ओके, नाउ 18th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो सेंटर ऑफ बाउंसी, मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर जाएंगे नहीं, ऑप्शन बी मिल गया हमको। इक्विलिब्रियम, मेटा सेंटर, अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमेशा ये याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है मेटा सेंटर ऊपर में होगा, उसके नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उसके भी नीचे होगा सेंटर ऑफ बाउंसी। दिस विल बी दिस लाइक क्रोनोलॉजी, ठीक है। ये पहले मेटा सेंटर को ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। तो मेटा सेंटर विल बी अबव ऑफ the center of gravity of the body, obviously remember this will be of the body, the center of gravity of the body should be below of the meta center, so meta center is above the center of gravity, option B is the right answer here. Now ये बोल रहे हैं कि एक if the 90% of the volume of an iceberg is immersed in the water and only 10% volume is above the water ऑफ द वाटर सरफेस, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग, ये चाहिए इसको, और इनको दिया है कि मतलब ये वाटर का, सी वाटर का डेंसिटी हमको 1025 kg पर मीटर क्यूब दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये अगर ये हम लोग का सी बेड है, ठीक है, तो एक आइसबर्ग है, मान लो ये है आइसबर्ग जिसका 90% डूबा हुआ है, तो ये अगर मैं अगर एज्यूम कर दूं कि लेट अस एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग टू बी वी, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है वी, ठीक है। तो इसका जो अपना ये है, अपना जो जितना सबमर्ज्ड हुआ, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना होगा 90% ऑफ वी, दैट मीन्स 0.9 वी, इतना अमाउंट ये सबमर्ज्ड हुआ और 0.1 भी ये ऊपर है। तो हमें चाहिए इसका रो ऑफ आइसबर्ग, लेट अस नेम दिस एज रो सी, ठीक है। और इस ये सी वाटर है, सी वाटर में ये सबमर्ज्ड हुआ है, तो सी वाटर का जो रो दिया हुआ है तो उसको हम बोल देंगे रो एफ, तो रो एफ का को बोलेंगे रो डब्ल्यू बोल देते हैं। तो रो डब्ल्यू जिसको दिया हुआ है कि 1025, ठीक है, ये दिया है हम लोग को। और क्या दिया है, और भी शायद कुछ है जिसका नहीं, कुछ नहीं है और चाहिए भी नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ये बोला है कि इसका जो रो चाहिए हमको निकाल के दो। तो वेट फिर से सेम ये अपना होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम है कि वेट ऑफ द बॉडी जिसको डब्ल्यू बी बोलेंगे, वो क्या होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना फ्लूइड आप डिस्प्लेस करोगे उतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड का जो वेट होगा वो आपका बॉडी के वेट के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये तैर रहा है। जो 1% भी तैर रहा है वो उसके लिए ही तैर रहा है, क्योंकि जितना भी इमर्स्ड हुआ उसका वॉल्यूम, इसका वेट, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की वेट, इसका मतलब जितना सबमर्ज हुआ उसकी वेट के साथ, मतलब पूरा टोटल बॉडी के वेट के साथ ही इक्वल हो गया। अगर नहीं होता तो ये फिर से डूब जाता, पूरा डूब जाता, ठीक है। तो वेट ऑफ अपना बॉडी क्या होएगा, वेट ऑफ बॉडी इज नथिंग बट सेम चीज है, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट निकालने के लिए हमको स्पेसिफिक वेट इज रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। सो यू नीड टू नो दिस। तो रो इंटू जो, तो रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम अगर होगा तो रो हम तो इसको मान लिए ये अपना रो सी है, जी तो जी है, और वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम हमने पहले ही मान लिया, इसको पूरा भी बोल देंगे। लेकिन रो मतलब वेट ऑफ वाटर जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका क्या रो होगा, उसका क्या वेट होगा, सेम होगा।
तो वेट रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, तो रो क्या होगा इसमें, रो वाटर होगा, जी तो सेम है, और इस वाला वॉल्यूम क्या होगा, जितना डिस्प्लेस्ड हुआ, इतना डिस्प्लेस्ड हुआ, येलो कलर से जो मार्क कर रहे हैं इतना अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड हुआ, तो इसका वॉल्यूम होगा 0.9 वी। तो इसमें क्या होगा, g एंड v विल बी गेट कैंसल्ड आउट, सो इट विल बी रो c विल बी इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर, दैट इज, अभी मैं ये इसको लिख देता हूँ कि ये है 1025 इंटू 0.9। तो अगर ये हम कैलकुलेट करें तो इसका हमको आंसर निकल कर आएगा 922.5 kg पर मीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी 922.5 kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेम क्वेश्चन है। देखिए आप इंपॉर्टेंस समझिए इस क्वेश्चन का, ये 4 बार आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान एक कॉन्सेप्ट है कि मेटासेंट्रिक हाइट और मेटा सेंटर जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी से ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये है, देखिए its metacentric height is a positive value, okay, ये तो है। if center of gravity is below the center of buoyancy, okay, its metacentric height is 0। I hope ये body is said to be in stable equilibrium if the center of a metacenter height is a positive value, ये होगा right answer। ठीक है, this will be the, इसमें भी एक चीज हम लिख देते हैं इसमें। ठीक है, ये होगा क्या कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल, इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मेटासेंट्रिक हाइट इज लेस देन 0 होगा तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इफ द मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल्स टू 0 इट विल बी न्यूट्रल। सो दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू हैव इन योर माइंड। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन था। ठीक है, जो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि बोले कि एक आइसबर्ग है, फ्लोट्स इन द सी वाटर है, 14% ऑफ द वॉल्यूम इज प्रोजेक्टिंग अबव द सी सरफेस। तो इसका मतलब क्या है कि 86% ऑफ जो वॉल्यूम है ये सबमर्ज हो चुका है। तो स्पेसिफिक वेट दिया है कि 10400 है, तो डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग। तो पहले रो दिया हुआ था, रो चाहिए था, इसमें स्पेसिफिक वेट दिया है और स्पेसिफिक वेट ही चाहता है आइसबर्ग का। तो सेम है कंडीशन, तो कुछ अलग नहीं है, ये सी बेड है। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, इसमें उसमें था 10% था, इसमें है क्या 86% ऑफ द वॉल्यूम। तो एक सेकंड, ऐसे नहीं लिखते हैं, लेट अस एज्यूम सेम द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, इसको एज्यूम करते हैं वी। तो ये 14% अगर ऊपर है तो ये क्या होगा 0.14 वी ऊपर है, इसका मतलब 0.86 वी इज सबमर्ज्ड, राइट। नाउ and this specific weight of this is given as, तो रो इंटू जी इज गिवन ऑफ द वाटर एज 10400। ठीक है, तो हमको चाहिए इसका रो इंटू जी, तो इसको हम मान लेते हैं रो सी इंटू जी हमें चाहिए। तो ये क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, सेम चीज है कि रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी। तो इसका रो क्या है, रो तो अपना है रो सी इंटू जी, ये टोटल वॉल्यूम हमको, ये टोटल अमाउंट ऑफ चीज हमको चाहिए, एंड वॉल्यूम है इसका वी, और इसमें रो वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम है अपना वो वाला जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड हुआ। ठीक है, कितना सबमर्ज्ड हुआ 0.86 ऑफ वॉल्यूम। तो रो इंटू जी देखिए दिया हुआ है कि ये 10,400 है और ये 0.86 वॉल्यूम है, और इसका हमें ये टोटल अमाउंट चाहिए इंटू वी, तो वी विल बी कैंसल्ड आउट हियर। तो रो सी एंड जी इसको हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू सी क्या है वो अपना क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग अगर बोलते हैं तो ये कैलकुलेट कर लो थोड़ा, ये 10,400 इंटू 10,400 इंटू 0.86, इसका आएगा 8944, सेम न्यूटन पर मीटर क्यूब।
हाँ देखिए, ऑप्शन है क्या, नहीं है क्या? 8944 ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए। तो सेम चीज है, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड व्हिच हैज बीन डिस्प्लेस्ड। यही चीज है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो इस वाला चैप्टर को भी हम खत्म कर लिए। ये छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ 21 साइड क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ये चैप्टर है। आई होप कि मैंने ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके साथ आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी दे दिया कि चैप्टर की थोड़ा थ्योरी पार्ट के आइडिया थोड़ा डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, जैसे बाउंसी फोर्स कहाँ से एक्ट करेगा, बाउंस फोर्स क्या होता है, जो नेट वर्टिकल प्रेशर होता है एक बाई एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड टू द बॉडी, ये होता है। फिर बोला कि इक्विलिब्रियम में रहने अगर रहने के लिए क्या चाहिए, अपना मेटा सेंट्रिक जो मेटा सेंटर है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी उससे एबव रहना चाहिए अगर ये स्टेबल होगा। और क्यू स्टेबल क्यू अनस्टेबल है वो भी आपको दिखा दिया कि मोमेंट क्यू कैसे आ रहे हैं, अगर ये सेंटर मेटा सेंटर अगर नीचे होगा तो कैसे मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज टिल्ट करेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो ये सब थोड़ा बहुत एस्पेक्ट हम बात किया। ठीक है, तो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस प्लीज like don't forget to subscribe the channel, and obviously put a like in the video, and every day around 11 o'clock I will be live, and I am like requesting you, I'm inviting you all, whoever is watching this in a recording form or recorded lecture, please come and join live to my video. That is how we can make this session very interactive, and also the level of the class will be very increased if you like if you come live every day. So it is my humble request to come live every day at 11 o'clock. This class is going on, and once this is completed I will be starting with another subject. Okay, according as per your order, what you want to be completed in this channel, I will be coming with that subject only. And this is the thing, and if you are liking, if this video is helping you by only 1% also, ठीक है, अगर 1% भी आपको ये लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है आपके लिए, तो प्लीज शेयर विद दिस, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसको शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट अगर रिगार्डिंग द वीडियो इज, इफ यू हैव एनी डाउट, just make a comment. Okay, put a comment below this video, and I will be trying my level best to solve your doubt, and I will take this doubt in the next class for sure. So that is it for today. Thank you for watching the videos, and if you obviously my humble request to come live if it is possible. Otherwise, if it is not possible for you particularly, so obviously you can go through the live sorry recorded lecture obviously. And I promise this is going to be a very beneficial series for you. If you have already completed fluid mechanics, it will be a revision course for you. If you has not completed fluid mechanics, so if you are still attending my class, it will be giving you a little bit of conceptual clarity, as well as it will give you the concept how the questions are coming in the examination. And if you are in semesters, still it will help you for semester point of view. You will have some theoretical knowledge in this class. So thank you everyone for like joining, and thank you everyone for watching the video. Maybe it is in live manner or recorded. So whoever is watching my video, very thank you. And if it is beneficial for you, please share this with your friends, and please come live if it is possible. So इतना ही आज के लिए बोलना चाहूँगा। फिर कल आएंगे and meet you all at 11 o'clock and tomorrow. So till then, have a very good day.